So at last we'll discuss kidney as osmoregulatory organ too. We were discussing kidney as an excretory organ up to this point, but at the same time, kidney also plays an osmoregulatory role too, because it is dealing with the excess or scarce amount of water, and it is actually conserving water in the scarcity and removing water in the abundance. So at the same time, with excretory role, it is performing osmoregulation too, that is the production of varied concentration of urine. We have discussed in the previous lessons categorically that जैसे ही पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, पानी जितनी मिकदार में आपकी बॉडी के अंदर है, उस हिसाब से किडनी उसको सेंस करती है, और अगर एक्स्ट्रा पानी है तो उसे बाहर निकाल देती है, और अगर पानी कम है तो उसे मैक्सिमम कंजर्व कर लेती है। सो ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के ऊपर, जो स्लाइड्स में रिवाइज कर दूंगी, जिसमें ये पता चल जाएगा कि हाउ इट इज कंसर्न्ड विद अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, that is mechanism of urine dilution when it was actually required with abundance of water. How is it possible to make the urine dilute and to remove excess amount of water outside through urine? Similarly, mechanism of urine concentration अभी पिछले स्लाइड्स में हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ इसलिए यूरिन में से पानी को निकालना ज़रूरी था क्योंकि पानी जिस्म में पहले कम था और हम एक्स्ट्रा पानी को कंजर्व करना चाहते थे यूरिन में निकालने की बजाय, सो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया गया। दिस इज 100% इन द कंट्रोल ऑफ किडनी। इट कैन सेंस द अमाउंट ऑफ वाटर एंड कैन डील अकॉर्डिंगली। इसलिए हम कहते हैं कि not only it is performing an excretory role but also osmoregulatory too, according to hypotonic and hypertonic conditions. Next, we'll start with kidney problems and cures. Because kidneys playing a very important role in our life, it is performing a lot of functions for our body. तो अगर किडनी में खुद कोई प्रॉब्लम हो जाता है, because it is dealing with very dangerous and toxic materials, तो अगर नेचुरली इसमें कोई प्रॉब्लम या कोई मेलफंक्शनिंग आ जाती है, तो फिर किडनी में क्या असरात होते हैं, बॉडी पर उसके क्या असरात हैं, और फिर अगर कुछ हैं तो वो फिर क्योर कैसे किए जा सकते हैं, ये आपके सिलेबस में जितना शामिल है उतना हम डिस्कस कर लेते हैं। There are some unusual situations may arise in the functions of kidney by the factors originating without kidney or outside. यानी जरूरी नहीं है कि किडनी के अंदर ही कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से किडनी खराब हो रही है या सही तरह से अपना काम नहीं कर रही। इसके फंक्शंस उसके अंदर चलते हुए टॉक्सिन्स के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर एक्सेस ऑफ समथिंग सर्कुलेटिंग इनटू अ ब्लड और सम ट्रॉमा और इंजरी एट द सेम टाइम। सो कुछ अनयूजुअल चीजें हो सकती हैं जिसकी बुनियाद पर किडनी somehow or the other अगर डिस्टर्ब हो। These causes can cause a serious kidney diseases, maybe very long ranges there of kidney diseases, but we'll definitely confine towards the syllabus. Amongst them there are kidney stones, the very important highlighted disease, that is kidney stones. They are actually meant for some stony materials that are found in the kidney, and these cause urinary obstructions. यूरिनरी सिस्टम किडनी से शुरू होता है और जाकर ब्लैडर पर और फिर उसके बाद यूरेथ्रा पर खत्म होता है। ये सारी चीजें हम यूरिनरी सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किडनी में कोई स्टोन होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम किडनी इट कैन मूव अलोंग विद द यूरिन टू पेल्विस, फ्रॉम पेल्विस टू यूरेटर, फ्रॉम यूरेटर टू ब्लैडर एंड फ्रॉम ब्लैडर टू यूरेथ्रा। सारे का सारा यूरिनरी सिस्टम किसी न किसी तरह उससे ऑब्स्ट्रक्ट यानी ब्लॉक हो सकता है, एंड दैट कैन बी cause of serious infections too. Wherever they are present, those stony materials which are definitely not the part of your system, that's why they would cause some infections due to some microorganisms, and afterwards they can block the passage of urine. These stones have of specific chemical nature. Different तरह के हो सकते हैं स्टोन, हर बार एक ही तरह का नहीं होता। डिफरेंट केमिकल्स जिनकी एक्सेस है वो किडनी में अगर प्रेसिपिटेट हो रहे हैं तो उनकी नेचर उस हिसाब से डिसाइड होती है। जैसे हाइपरकैल्सीमिया, एज द नेम इंडिकेट, हाइपर फॉर एक्सेस एंड कैल्सीमिया फॉर कैल्शियम लेवल। तो अगर हाई कैल्शियम लेवल की वजह से स्टोन्स होते हैं तो ये मोस्टली मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं। During metabolism, hypercalcemia यानी high level of circulating calcium in blood में कैल्शियम की अमाउंट एक्सेसिव हो जाएगी, उसकी वजह से
ये किडनीज में स्टोर होना शुरू होगा या प्रेसिपिटेट होना शुरू होगा। साथ ही मेंशन कर दिया गया दैट कैन बी बिकॉज ऑफ सम अदर डिजीजेस टू, बिकॉज ऑफ सम malfunctioning ऑफ योर ग्लैंड्स जो कैल्शियम से और कैल्शियम की इनटेक टू ब्लड एंड टू बोन्स डील कर रहे हैं। दैट वुड डेफिनेटली बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अगर वो ग्लैंड्स अपने परफॉर्मेंस सही नहीं कर रहे हैं तो ब्लड में सर्कुलेटिंग कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा, और जैसे ही वो सर्कुलेटिंग कैल्शियम किडनी तक पहुंचेगा तो किडनी एक्सेसिव मटेरियल को फिल्टर करेगी और उसमें ये प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएंगे। सिमिलरली हाइपर ऑक्सिलूरिया, दिस इज द हाई ब्लड लेवल ऑफ ऑक्सलेट्स. Just like calciums, oxalates can also be precipitated, and they are another contributing factor to form calcium oxalate stones. It means that they are going to make a molecule together with calcium, and they will include calcium oxalates. Oxalates, they are mostly present in green vegetables, mostly, and some tomatoes too. So excessive amount of usage of these types of things having oxalates in them, they can cause the source of hyperoxaluria, that is higher oxalates in the body, and definitely that would be precipitated into द किडनीज। एंड किडनीज जो हैं फिर उनको निकालने के लिए खुद इस काबिल नहीं है कि वो उनको निकाल सकें, तो वो स्टोन उसमें इकट्ठे होते जाएंगे, और अगर किडनी में से वो यूरिन की फॉर्मेशन के साथ साथ मूव कर जाएं तो वो फिर किसी भी रास्ते में ब्लॉक हो सकते हैं, और ब्लॉक हुआ रास्ता दैट वुड कॉज अ पेनफुल डिजीज ऑफ स्टोन्स। तो खास तौर पर अगर किसी डेलिकेट हिस्से में लाइक यूरेटर अगर स्टोन है तो दैट वुड बी द मोस्ट पेनफुल, बिकॉज व्हेन इट वुड मूव विद द मूवमेंट ऑफ यूरिन फ्रॉम योर किडनीज टू ब्लैडर, तो वो रास्ते में यूरिन में अगर ब्लॉकेज है तो इट वुड कॉज अ सीवियर पेन in the patients. These are kidney stones as are shown in this diagram. Kidney stones in the minor and major calyces. We have discussed these two terms before in the structure of kidney. What are these things? When pelvis, it would give its branches to that of the renal pyramids. तो इसमें जो छोटी branches हैं उन्हें हम minor calyces कहते हैं, और जब जो बड़ी बड़ी हैं उन्हें हम major calyces कहते हैं। इनमें से जब वो ब्रांचेस में आप देख रहे हैं कि स्टोन्स आ चुके हैं, स्टोन्स कैन बी एट डिफरेंट प्लेसेस। जरूरी नहीं है किडनी में किसी एक जगह पर वो स्टोन्स हों, किडनी के अंदर लोकेटेड रह सकते हैं या वहां से यूरिन के साथ वो मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है कि इनमें से यहाँ से ये पेल्विस से होकर ये स्टोन एक यहाँ यूरिटर में आ चुका है, और यूरिटर बहुत बारीक नाली होती है दैट इज नाउ टेकिंग द यूरिन टू दैट ऑफ द ब्लैडर, और आप देख सकते हैं कि इस स्टोन ने उसको दोनों तरफ से डायलेट किया हुआ है, यूरेटर की अपनी डायलेशन हुई हुई है और ये यहाँ फंसा हुआ है। इसके फंसने से यूरिन ब्लॉक होगा, और जब यूरिन ब्लॉक होगा तो डेफिनेटली पेशेंट को यूरिन एक्सक्रीट करने में प्रॉब्लम होगी, नंबर 1। एंड नंबर 2, यहाँ से जब ये यूरिन की मूवमेंट की वजह से थोड़ा बहुत हिलेगा तो बहुत ही सीवियर पेन कॉज होगी, and that would be an indication towards presence of kidney stones, and that can be located by different types of ultrasounds, and afterwards they can be treated. परसेंटेज ऑफ दीज किडनी स्टोन्स, जैसे हमने कहा कि किडनी स्टोन्स के केमिकल नेचर्स डिफर कर सकते हैं। दे कैन बी ऑफ हायर कैल्शियम, दे कैन बी ऑफ हायर कैल्शियम ऑक्सलेट्स और कैल्शियम फॉस्फेट्स और यूरिक एसिड। तो उस हिसाब से हम परसेंटेजेस देख लेते हैं कि कॉमनली इनकी परसेंटेज कितनी होती है। द इंसिडेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप स्टोन्स, दे आर 70%। तो सबसे ज्यादा जो स्टोन्स ऑब्जर्व किए गए हैं that would be of calcium oxalate type. Similarly, the incidence of other types of stones like calcium phosphate, it is 15%, and that of uric acid, it is 10%. So ये वो incidence हैं जो MCQs में directly पूछे जा सकते हैं कि किस किस्म के chemical nature के kidney stones कितने परसेंट होते हैं, और direct question पूछा जा सकता है। These salts, they are precipitated out during urine formation and accumulate later to form stone. ये स्टोन एक ही दफा में इतना बड़ा नहीं बना था, रिमेंबर दैट, या फिर यूरिन से मूव करते हुए एट एनी प्लेस थ्रू आउट यूरिनरी सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम किडनी टू यूरेथ्रा दे कैन मूव, और अगर वो एक स्टोन की सूरत में मूव करें तो दैट वुड कॉज सीवियर पेन, बट आफ्टरवर्ड्स अगर हम उनकी ट्रीटमेंट करके उन्हें छोटा कर देते हैं तो फिर वो इजीली टैकल किए जा सकते हैं। द ट्रीटमेंट, लिथोट्रिप्सी।
Lithotripsy is that non-surgical treatments by which the kidney stones can be removed. Two things are there. Number one, either to remove those stones by surgery or to remove them by some other method. Mostly lithotripsy is preferred, that is non-surgical removal of kidney stones. Surgery karna is definitely a difficult task to open the whole abdomen, and then afterwards they would deal with the stone differently, और उसमें थोड़ा मुश्किल काम है. It's a long process. So एक अच्छा और शॉर्टकट ट्रीक ढूंढा गया है, that is lithotripsy. इसे नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन कहते हैं. इनमें बिना सर्जरी किए हम स्टोन्स को रिमूव कर सकते हैं, और उसका टेक्निक जो है वो ये है कि स्टोन को तोड़ दिया जाता है. स्टोन एक बड़ा सा टुकड़ा बन चुका है अगर, या छोटा टुकड़ा भी इवन है, तो वो किडनी और उसके सिस्टम के लिए तो बड़ा ही कंसिडर होगा, क्योंकि वो छोटी और डेलिकेट चीजें हैं. उनको तोड़ दिया जाता है. उनको तोड़ा जाएगा और फिर उसके बाद उसको यूरिन की मूवमेंट के साथ बाहर निकाला जाएगा. सेम तरीका इस्तेमाल किया जाता है, ना सिर्फ स्टोन्स को किडनी और यूरेटर से निकालने के लिए, सिमिलरली फ्रॉम गॉल ब्लैडर टू. wherever the stones are present, they can be treated with this treatment. जिसमें हम कर क्या रहे हैं? One of the type of lithotripsy that is most favorite for the treatment of stones is ESWL, that is extracorporeal shockwave lithotripsy. ये सबसे ज़्यादा lithotripsy में preferred mechanism है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? High concentration of X-rays or ultrasounds, दोनों radiations maybe of X-rays or ultrasounds, they are directed from a machine outside body to the stone inside. High concentrations डाली जाएंगी X-rays की या ultrasound rays की to the stone. एक मशीन से उनको इनपुट किया जाएगा. टारगेट एरिया होगा हमारा स्टोन जिसको हम तोड़ना चाहते हैं. उस स्टोन को ये शॉक वेव्स छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देंगी, या फिर सैंड पार्टिकल्स में. इंतहाई छोटे टुकड़े जो कि आसानी से मूव कर सके, या फिर इतने छोटे जैसे सैंड जर्रात होते हैं या मिट्टी के जर्रात होते हैं, ताकि फिर उसके लिए यूरिन के साथ मूव करना आसान हो जाए. So the mechanism behind ESWL is to break those stone pieces into so small particles that they can move easily with the passage of the urine system. Thank you very much.